वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव की स्थिति बरकरार है। सैन्य वार्ताओं के बावजूद विवाद जस का तस बना हुआ है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन ईमानदारी से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई स्तर की वार्ताओं का दौर जारी है। भारत और चीन दोनों ने ही चरणबद्ध तरीके से तनाव को कम करने पर जोर दिया है। India and China have been having discussions through established diplomatic and military channels to address the situation along the LAC in India-China border areas. The senior commanders of two sides had met on 6th June, 22nd June and on 30th June. Diplomatic engagements are also continuing in parallel, and last week on 24th June, a meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, that is the WMCC, was also held. The senior commanders meeting held on 30th June at Chushul was the third senior military commander level engagement to discuss issues related to disengagement at the face-off sites along the LAC and de-escalation from the border areas. Both sides have emphasized the need for an expeditious, phased and stepwise de-escalation as a priority. This is in keeping with the agreement between External Affairs Minister and his Chinese counterpart during their conversation on 17 June that the overall situation would be handled in a responsible manner and that both sides would implement the disengagement understanding of 6 June sincerely. The discussions in the latest meeting of the senior commanders reflected the commitment of both sides to reduce the tensions along the LAC. The two sides will continue their meetings both at the military and diplomatic level, including under the framework of WMCC, in the future to resolve the issues to mutual satisfaction. We expect the Chinese side to sincerely follow up and ensure the expeditious restoration of peace and tranquility in the border areas as per bilateral agreements and protocols. भारत की तरफ से 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाए जाने पर जानकारी देते हुए अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में किसी भी ऐप का परिचालन करते समय संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा जारी किए गए हमारे नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जो डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता से संबंधित है। The blocking of these apps, while I would like you to refer you to the concerned ministry for the specifics of your question, I can inform you that India is one of the most open regimes in the world for attracting foreign direct investment. And in the last few years, government has taken a host of measures for creating a more investor-friendly regime. Similarly, in the area of digital technology and internet, India has adopted a very open regime. India is today one of the world's largest markets for digital and internet technologies with more than 680 million subscribers. The world's largest software and internet application companies are present in India. Naturally, while operating in India, they have to abide by our rules and regulations issued by the relevant ministries and departments, including those pertaining to data security and privacy of individual data. While we will continue to welcome foreign investments in India, including in the area of internet technologies, but this will have to be in accordance with the rules and regulatory framework established by the government. दोनों देशों के बीच सीमा तनाव इस समय चरम पर है। 15 जून की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। झड़प में चीन के सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन उसने अब तक इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।